हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? पेपर्स आपके अच्छे ही जा रहे होंगे। तो आज अपन रखे हैं बायो का पूरा कंप्लीट रिवीजन लेने वाले हैं, बट उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट जो है वो प्लांट का पूरा जो सेक्शन है वो कवर करेंगे, चैप्टर नंबर 2 से लेके चैप्टर नंबर 7 तक कोशिश करेंगे पूरा कंप्लीट करने का। तो पार्ट 1 है। दूसरा फिर हम ह्यूमन फिजियोलॉजी कवर करेंगे इसके बाद, ठीक है? तो आज जो है, आज अपन पार्ट 1 कंप्लीट कर लेंगे, जो चैप्टर नंबर 2 से 7 है। एंड अगले क्लास क्या करेंगे, कल जो है, कल दोपहर में या इवनिंग में जो आपको टाइम शेड्यूल दे दी जाएगी, तो उस टाइम में अपन बाकी आगे का कवर कर लेंगे, ठीक है? तो चलो बच्चों, विदाउट एनी लेट चलो आगे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या-क्या चीजें आने वाले हैं, वो चीजें अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं शॉर्ट में कि जैसे कि बेटा यहाँ पे आपको दिख रहा है कुछ चीजें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या होती है? क्रोमोसोम कलर्ड बॉडीज होते हैं, कॉम्पैक्ट कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं बेटा, ठीक है? तो जैसे कि बेटा आप यहाँ पे देख रहे हो, ये एक न्यूक्लियस सेल है। तो सेल के अंदर बेटा क्या आपका है, यहाँ पे बेटा न्यूक्लियस है, ठीक है? एंड न्यूक्लियस में बेटा आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, ना आपका ये क्रोमोसोम्स कुछ आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है? तो क्रोमोसोम जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, और क्रोमोसोम के अलावा अगर हम बात करें, ये जो क्रोमोसोम दिख रहा है, इस क्रोमोसोम को थोड़ा लेवलिंग करना आना चाहिए। क्रोमोसोम का लेवलिंग के ऊपर क्वेश्चन आता है। जैसे ये आपका बेटा आपका सेंट्रोमियर है, ठीक है? तो सेंट्रोमियर है, और ये बेटा आपका क्या होती है, दोनों बेटा आपका क्या होता है, आर्म्स होते हैं। दीज आर व्हाट, आर्म्स। एंड ये जो बेटा आपका ये होता है, ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड भी कहा जाता है, ये एक दूसरे के कॉपी होते हैं। दिस वन इज द कॉपी ऑफ दिस वन, इसलिए इन दोनों को हम बेटा क्या कहेंगे, सिस्टर क्रोमैटिड भी कहेंगे, ठीक है? एंड इस जो क्रोमोसोम को जब हम क्या करते हैं, थोड़ा लूज मैग्नीफाई करके देखते हैं, तो हमें क्या नजर आता है, हमें नजर आता है ये क्रोमैटिन फाइबर। जो क्रोमैटिन फाइबर की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो क्रोमैटिन फाइबर आपका किससे बना हुआ है? तो जो आपका बेटा क्रोमैटिन फाइबर है, वो आपका बना हुआ है, दिस इज द क्रोमैटिन फाइबर की अगर हम बात करें, दिस इज कंपोज्ड ऑफ अ डीएनए। डीएनए एंड साथ में बेटा और क्या है, ना आपका हिस्टोन प्रोटीन है। ये दोनों चीजों से बेटा आपका क्या हुआ है, बना हुआ है। डीएनए एंड हिस्टोन से बना हुआ है, साथ में कुछ आरएनए भी रहेंगे, ठीक है? तो डीएनए, आरएनए एंड हिस्टोन, इन सबको मिला के आपका क्या बनी है बेटा, क्रोमैटिन बनी है, ठीक है? तो फिर अब आता है कि क्रोमैटिड क्या होती है, ठीक है? तो जैसे एक डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम आपको दिख रहा है बेटा यहाँ पे, जैसे आपको यहाँ पे एक डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम दिख रहा है, ठीक है? इस डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम में आपको 2 क्रोमैटिड नजर आएंगे, ठीक है? एक तो बेटा ये वाला एक क्रोमैटिड है, दिस इज वन क्रोमैटिड, ओके? एंड दिस इज अनदर क्रोमैटिड। बेटा यहाँ पे 2 क्रोमैटिड आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है? फिर अपन बात करते हैं क्या है, तो आपका सेंट्रोमियर, द प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज द प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। ये जो बेटा आपका क्या है, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है। इसको बेटा अपन क्या कहेंगे, सेंट्रोमियर कहेंगे। नेक्स्ट, न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम क्या होता है, दिस इज द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन। डीएनए एंड हिस्टोन का एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, जिसको न्यूक्लियोसोम कहा जाता है। ये टर्म्स इसीलिए बेटा यहाँ पे बता रहे हैं, बेटा ये टर्म्स जो है, यही एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, टर्म्स आपको डिफाइन करने के लिए बोलिएगा। हिस्टोन, हिस्टोन प्रोटीन जो कि ऑक्टामर होता है। हिस्टोन एक क्या होता है, ऑक्टामर होता है, याद रखना। हिस्टोन इज ए ऑक्टामर, 8 मोनोमेरिक यूनिट को लेकर बना हुआ है। डीएनए न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है इसको, ठीक है? न्यूक्लियोटाइड, DNA is composed of a nucleotide. DNA is also called as polynucleotide chain. DNA को और एक नाम से भी बोला जाता है polynucleotide chain, because that is composed of many nucleotides, and nucleotides are the repeating structures found in DNA. If you see the DNA, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो बेटा, ये DNA है, ठीक है? तो इसमें आपको क्या मिलेगा, ना न्यूक्लियोटाइड्स मिलेंगे। और ये जो न्यूक्लियोटाइड किससे बने होते हैं, दिस न्यूक्लियोटाइड्स आर कंपोज्ड ऑफ three things. One is phosphate and your pentose sugar, and third, that is nitrogenous base. क्या क्या है, फॉस्फेट, पेंटोस शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस। ये तीन चीजों को लेके बेटा आपका क्या बनी है, न्यूक्लियोटाइड बनी हुई है। नेक्स्ट, न्यूक्लियोसाइड। इफ यू विल रिमूव दिस फॉस्फेट पार्ट फ्रॉम द न्यूक्लियोटाइड, देन इट विल बिकम व्हाट, न्यूक्लियोसाइड, राइट? नेक्स्ट, नाइट्रोजनस बेस। Here, the nitrogenous base are of in DNA. There are 4 type of nitrogenous bases are found. That is A, T, C, and Z. Adenine, thiamine, साइटोसाइन एंड गुआनिन। ये 4 टाइप के नाइट्रोजनस बेस आपको देखने को मिलेंगे किसमें, डीएनए के अंदर, ठीक है? तो डीएनए को जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, ये आपका एक हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए का। किसने बताया था, वाटसन एंड क्रिक ने बताया था। किसने बताया था, वाटसन एंड क्रिक, ठीक है बेटा? क्लियर? अब अपन चलते हैं आगे।
नेक्स्ट जो पार्ट है आपका जीन है। जीन क्या होती है? तो अगर हम यहाँ पे जीन की बात करें तो जीन क्या होती है? स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए। अगर हम किसी स्पेसिफिक सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पे मैं अगर किसी स्पेसिफिक सेगमेंट को लूं, यहाँ पे दिस इज द स्पेसिफिक सेगमेंट। तो स्पेसिफिक सेगमेंट जो है, ठीक है, डीएनए का, तो उसको क्या कहेंगे ना, आपका क्या कहा जाएगा? इसको इसको कहा जाएगा जीन। खाली इतने से नहीं होता है। तो अगर हम जीन को अगर डिफाइन करने की बात करें तो जीन को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? जीन इज द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। स्पेसिफिक specific sequence of व्हाट? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड के स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है जिसको हम क्या कहते हैं आपका? एंड दिस सीक्वेंस शुड synthesize or code for certain protein, that should code for certain protein, then this will be called as gene, and gene are present on chromosome. That's why chromosomes are also called as carrier of hereditary material, and the hereditary units are genes. Genes are also known as हेरिडिटरी यूनिट्स। नेक्स्ट कैरियोटाइप। यहाँ पे साइड में एक आपको डायग्राम दिख रहा है, ठीक है, कैरियोटाइप दिख रहा है। जब हम क्रोमोसोम्स को व्हेन वी अरेंज द क्रोमोसोम्स, वी अरेंज द क्रोमोसोम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर लेंथ, ऑन द बेसिस ऑफ देयर लेंथ, जब हम अरेंज करते हैं उसको बेटा क्या कहा जाता है? कैरियोटाइप कहते हैं। क्या कहते हैं? कैरियोटाइप कहा जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे इडियोग्राम, द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कैरियोटाइप। diagrammatic representation of a karyotype, diagrammatic representation of a karyotype. When we represent the all the chromosomes in a cell according to their decreasing order of the length diagrammatically, then it is called as ideogram. Next, genome. Genome, if you will take a gamete that must be containing half of the chromosome. If human cell is having 46 number of chromosome, then human gamete must contain how many number of chromosome? 23. And if we will calculate or count or sum all the genes present on this 23 number of chromosome, that will be called as genome. Genome is the sum of all genes present in a haploid cell, or you can call haploid cell, or you can call, you can say that is the gamete. गैमेट में जितने भी जीन्स होंगे सबको मिला दो तो क्या बन जाएगा? जीनोम बन जाएगा। देन डीएनए रेप्लिकेशन। दिस प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन is a special characteristic feature of DNA. Okay, and what happens during this process? During this process, the DNA can make its own identical copy. Like these two strands of DNA will first separate from each other, and the new strand will be synthesized on it, due to which two DNA strands are formed, and these are identical of the parent strand. These two strands will be called as daughter DNA, and this is the parent DNA, and this process is called as DNA replication. This is a property or characteristic feature of a DNA by which DNA can make its own identical copy. This will be called as DNA replication. Now, क्वेश्चन यहाँ पे है, जिसको बेटा आपको सॉल्व करना है। तो इसमें जैसे कि ये जो येलो वाला पार्ट है, ये क्या है? दिस येलो पार्ट, दिस येलो पार्ट इज व्हाट? दिस इज लेवल्ड एज 1, दैट इज द फॉस्फेट। बेटा ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है। फॉस्फेट, एंड दिस इज द पेंटोज शुगर। ये जो 5 कार्बन का जो रिंग दिख रही है, ये आपका पेंटोज शुगर है। सेकंड वाला आपका हो गया बेटा पेंटोज शुगर। थर्ड is the nitrogenous base. This is nitrogenous base. And fourth is the hydrogen bond. They may ask which type of bond is present between the nitrogenous base. Between two nitrogenous base, the hydrogen bond is present. Right. Now, moving to the next slide. Blank कैसे हो गया?
बैक करना पड़ेगा, स्लाइड्स आर ब्लैंक। यस इट्स देयर, ओके। सॉरी थोड़ा सा डिले हो गया, यहाँ पे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, ये हो गया बेटा आपका कौन सा वाला ना, आपका स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम हो गया। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं इसके बारे में। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगला चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन है। तो सेल साइकिल, व्हाट इज सेल साइकिल? Cell cycle is organized. Cell cycle is what? This is organized and predictable, that we can predict after after which phase is coming. Means like after G1, S phase will come, and from after S, G2 phase will come, and after G2, M phase will come. This is the sequence of a cell cycle. What is the sequence of cell cycle? G1, then S, then G2, then M. Cell cycle is organized, predictable, that we can predict. Series of events. Many events are taking place in a sequential order, like starting from G1, then S, then followed by G2, and the last one is M phase. Like this, the cell cycle is going on. And this G1, S, and G2, G1 followed by S, followed by Z2. These three stages are combinedly called as interphase. Interphase can be defined otherwise like this interphase is the duration of a cell cycle. This is the duration of cell cycle. This is the duration of cell cycle between two divisional phase, between two successive divisional phase, between two successive divisional phase. Duration of cell cycle, duration of cell cycle between two successive divisional phase या M phase. बच्चों थोड़ा अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। जो चीजें बता रहे हैं वही क्वेश्चंस में आने वाले हैं, टर्म्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट, क्या सेल साइकिल एंडलेसली चलता रहेगा? विल सेल साइकिल गो ऑन एंडलेसली? नो, जनरली नो होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये जो यस जो होती है ओनली फॉर ट्यूमरस या कैंसर सेल के लिए होता है। कैंसर सेल दे नेवर स्टॉप डिवाइडिंग, जिसके वजह से जो आपके ट्यूमर सेल या कैंसरस सेल्स हैं ये कभी डिवाइड करना बंद नहीं करते हैं, इसलिए इनकी जो सेल साइकिल है वो एंडलेसली चल सकता है। बट व्हाट अबाउट अदर सेल्स इन आवर बॉडी, नॉर्मल सेल्स, लाइक इफ यू टॉक अबाउट ब्रेन सेल्स, यस दे नेवर डिवाइड, they never divide. If we talk about the liver cell, that they can renew themselves, replace themselves within 500 days or more than 1 year. Third thing, that is the skin cells, that is the epidermal cells. They can replace themselves within certain weeks or certain days. Then meristems. These meristems, these cells are present in plants. These are the dividing cells, actively dividing cells of the plant, the meristematic cells. When the meristematic cell divides, that forms one meristematic and another permanent cell. And these permanent cells never divide until unless they are called upon to do so. What does that mean? इसका मतलब यह है जो परमानेंट सेल है वो तब तक डिवाइड नहीं करेगा जब तक, मतलब यहाँ पे परमानेंट सेल आपके कौन से स्टेज में प्रेजेंट है? जी नॉट स्टेज में प्रेजेंट है। जी नॉट स्टेज, दैट इज कॉल्ड एज क्यूसेंट स्टेज, दैट इज आल्सो नोन एज रेस्टिंग स्टेज. दिस परमानेंट सेल्स आर प्रेजेंट इन resting stage, or you can call Z naught stage. Until unless they are called upon to do so, means until unless it is required, this permanent cells will not again regain the capacity of cell division. They will regain the capacity of cell division under certain conditions. Like अगर आपने स्टेम को कट करके मिट्टी में लगाया तो उसमें क्या होगा? रूट की फॉर्मेशन होगी, मतलब वहां पे जो परमानेंट सेल्स थे तो फिर से डिवाइड करना शुरू कर दिए। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? परमानेंट सेल्स फिर से क्या कर दिया? मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी को दिखाया, मतलब वो जी नॉट स्टेज से निकल के वो फिर से आपका जी1 में फिर से आपका एंटर हुआ, राइट। नेक्स्ट, germ cells. Germ cells which are present generally in our gonads, that is male gonad testis, female gonad ovary, and inside these germ cells are present, and these germ cells undergo a special type of cell division, that is meiosis. Doesn't mean
The germ cells never undergo mitosis. They also undergo mitosis to multiply themselves. But for the production of a gamete, they undergo special type of cell division, that is meiosis. Meiosis के जरिए क्या करते हैं ये अपने जो मतलब gametes को produce करते हैं. Germ cells when they undergo meiosis, they produce 4 gamete in male and only 1 gamete, that is egg, in female. Means when the germ cells undergo meiotic cell division in males, that produce 4 sperms, and in case of when that germ cells undergo in meiotic cell division in female, that produce only 1 ovum, right? Now, tumorous cell, cancer cells, these cells, they can divide, they they have the uncontrolled cell division. They don't have any control on their cell division. That's why they can go on endlessly, right? But these are not normal cells, right? Now, sequence याद रखना है. Second thing, M phase में दो फेज होते हैं. एम फेज में दो स्टेज होते हैं. एक बेटा आपका होता है कार्योकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस. सेकेंड थिंग साइटोकाइनेसिस, दैट इज डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म. Karyokinesis further of have 4 sub stages, that is prophase, that is what, prophase, followed by metaphase, followed by anaphase, and followed by telophase. And after that, after telophase, cytokinesis takes place, that is the division of cytoplasm. Okay, that we'll discuss in the next slide. Now, coming to cell cycle, that is the divisional phase, which are also known as what, M phase, and M stands for divisional phase, and that can be of two types, that is can be mitosis or that can be meiosis. That can be mitosis or that can be meiosis. Now, first of all, we'll talk about mitosis. जो माइटोसिस में एम फेज था, जिस एम फेज में आपका पहला कार्योकाइनेसिस था, और कार्योकाइनेसिस में 4 सब फेजेस हुआ करता था, प्रोफेज, मेटाफेज, अनाफेज एंड टेलोफेज. यहाँ पे डायग्रामेटिकली इसको समझने की कोशिश करते हैं. तो सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे डिसअपियर होगा, न्यूक्लियर लॉस डिसअपियर होगा, क्रोमाटिन फाइबर जो है कंडेंस होकर क्रोमोसोम थिक एंड रॉड शेप के फॉर्म में अपीयर होंगे, सेंट्रियोल विल मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल, एस्टर रेस फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी. ये सारी चीज आपका प्रोफेज में होती है. मेटाफेज को कैसे डिफाइन करेंगे? When the chromosomes are aligned, when the chromosomes, duplicate chromosomes are aligned on metaphase plate, or this is also known as equatorial plane, then it will be called as metaphase, right? And when the splitting of a centromere takes place due to condensation of this what, this is spindle fibers, the splitting of centromere occurs, and due to the splitting of centromere, this crystal chromatids, they separate from each other and they move towards the opposite poles. And this stage is the best stage to study the shape of chromosome. And this metaphase is the best stage to study what, the number of a chromosome. You can count the numbers easily because all are aligned on a plane. Because all are aligned on a plane, you can count them easily. And anaphase, if the chromosome is looking V-shaped structure during the anaphase, then they must be of which type? They must be have metacentric. And if the chromosome appears, L shape, that must be submetacentric. If the chromosome during anaphase, sorry, looks J-shaped, that will be called as acrocentric. And the chromosome looks I-shaped or rod-shaped during anaphase, then it will be called as what? Telocentric. जो 4 टाइप के आपके क्रोमोसोम हैं, जो आपने पढ़ा हुआ है, क्या क्या है? मेटासेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक, टेलोस, एक्रोसेंट्रिक एंड टेलोसेंट्रिक. तो ये 4 जो है, ये अलग अलग शेप में आपको देखने को मिलेंगे. कहाँ पे? एनाफेज में. फॉलोड बाय टेलोफेज. तो टेलोफेज में क्या हो रही है? टेलोफेज में क्या हो रही है? दैट इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ प्रोफेज. Whatever the events are taking place during prophase, the opposite events will take place in the telophase. Like nuclear membrane, nuclear loss, they will reappear. Second thing, dissolution of spindle fiber will take place. There is no more spindle fiber are visualized. Third thing, the chromosome will disintegrate and
chromosomes are will no more available in distinct units. They will be not no more available in discrete units. They will again form chromatin fibers, right? This process is called as telophage, right? And what are the significance of mitosis? First one, growth. The number of cell increase. Number of cell increase. Repair, whatever the injury takes place. And if some cells are being damaged, they can repair itself by the process of mitosis. And replacement, if any injuries have taken place, in that condition, the dead cells are replaced by new cells, that is called as replacement, that is taking place by mitosis. Asexual reproduction. Asexual reproduction in plants. If we talk about the stem cutting, right? Then there which kind of division is taking place? Mitosis. Same number of chromosomes due to mitosis. The two daughter cells are formed from the parent cell. How many daughter cells are formed? Two daughter cells are formed which are having same number of chromosome as that was present in parent cell. Like here, the number of chromosome in parent cell is 46. Each daughter cell will also contain 46 number of chromosome. Means number of chromosome remaining same after this kind of division. So this will be called as same number of chromosomes are maintained. And the last one occurs in the somatic cells. What do you mean by somatic cells? Normally, generally, are body cells. Body cells, except the germ cells, which are producing gamete. गैमेट बनाने के लिए germ cell में meiotic division होती है. एंड जो आपका माइटोसिस है, तो माइटोसिस आपका किस में होता है बेटा? आपका यहाँ पे आपकी नॉर्मली आपका सोमाटिक सेल में होती है. ठीक है बेटा, ये समझ आ गया. सर कॉपी कैसे चेकिंग होगी और बोर्ड पेपर कैसा चेकिंग होगा? बेटा आप अपनी तैयारी के ऊपर ध्यान दीजिए. पेपर कैसे चेकिंग होगा, उससे आपको क्या मिलने वाला है, या उसके ऊपर हम डिस्कस करके क्यों टाइम खराब करें. ठीक है, पेपर बेटा आप अच्छा करो, जहां पे भी चेक होगा अच्छा ही चेक होगा. आप अच्छा लिखे होगे, मार्क्स तो अच्छे मिलेंगे ही, नो डाउट. ठीक है, तो उसके लिए आप परेशान मत हो, रिजल्ट की परेशानी मत हो बेटा. कर्म करते जाओ, काम करते जाओ. ठीक है, फल तो अच्छा मिलेगा ही. ठीक है, तो उसके ऊपर परेशान होने की जरूरत नहीं है. कॉपी चेकिंग जो होती है आपकी जो आपकी सेलिना बुक है, उसी के ही जो आपकी जो लाइंस हैं, उसी से ही कॉपी चेक होती है. जो टर्म्स मैं यहाँ पे लिखा हूँ, वो टर्म्स बहुत ज्यादा जरूरी है. वो टर्म्स पूरे सेलिना से एक एक टर्म्स उठाई गई है. वो टर्म्स आपको डिफिनेशन के लिए पूछा जा सकता है, या आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में वही टर्म्स ढूंढा जा सकता है. मैं कई बार बताया हूँ कि जब भी आप सब्जेक्टिव लिखते हो, एक दो लाइन का आंसर लिखते हो, उसमें जो ये टेक्निकल टर्म्स है उसको बेटा अंडरलाइन कर लेना. ये लास्ट टाइम बता रहा हूँ, उसको अंडरलाइन कर लेना पेंसिल से, ताकि एग्जामिनर को इजीली वो विजुअलाइज हो जाए, दिख जाए, परेशान ना होना पड़े. परेशान अगर एग्जामिनर हुआ, इवेल्युएटर हुआ, तो फिर आपको रिजल्ट में बेटा परेशानी होगी. सीधी सी बात है. चलो, अगला जो आपका नेक्स्ट जो टाइप ऑफ सेल डिवीजन है, दैट इज मियोसिस. मियोसिस जो कि आपका कहाँ पे होती है? दिस टेक्स प्लेस इन जर्म सेल. कहाँ पे होती है? इन जर्म सेल. जर्म सेल विच आर प्रेजेंट इन गोनट्स लाइक टेस्टिस एंड ओवरीज. And the by the process of meiosis, the parent cell undergoes meiotic cell division. And keep in mind, during meiosis, this meiosis is having further two stages, substages, meiosis 1 and meiosis 2, जिसका डिटेल में नहीं है आपके सिलेबस में, बट यहाँ पे दो तीन चीजें बातें बताऊंगा जो बहुत ज्यादा जरूरी है. During meiosis, how many time DNA replication takes place? Means how many time the S phase or DNA replication takes place? Only once. याद रखना, डीएनए रेप्लिकेशन ओनली टेक्स प्लेस वंस. एक बार ही आपका डीएनए का रेप्लिकेशन होता है. हालांकि मियोसिस में, इन मियोसिस देयर आर टू सब स्टेजेस, मियोसिस 1 एंड फॉलोड बाय मियोसिस 2. बट आफ्टर मियोसिस 1 आपका डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है. जो भी डीएनए रेप्लिकेशन होता है बिफोर मियोसिस 1 आपकी होती है. Second thing, this meiosis is also known as reductional cell division. Why this is called as reductional cell division? Because the number of chromosome reduced to half. When a parent cell undergoes meiotic cell division, like germ cell undergoes meiotic cell division, that produces four daughter cells are having how many number of chromosome? Half the number of chromosome, that is 23. If this is a human cell, then each cell must contain 23, that is half of the chromosome that was present in parent cell. So
The number of chromosomes are halved. That's why this is called as reductional cell division. Unlike mitosis, mitosis is called as equational cell division because in mitosis, number of chromosomes remains same, but in meiosis, number of chromosomes reduced to half. That's why this is called as reductional cell division. Next point, what is next? Another question may be asked, that is crossing over, chromosomal crossing over. These are the homologous pairs. What is homologous chromosome? Homologous chromosomes are those chromosomes which are having similar or same genes on the pair of chromosomes. Like if we talk about this pair of chromosomes, if this is the paternal chromosome, the blue one, and the red one is the maternal chromosome, at same point, similar genes are present. This is the copy of this one, this is the copy of this one, but whatever the gene is present here, the similar gene must be present on that part. Then only these two chromosomes will be called as homologous pair. And homologous pair undergo crossing over, and this crossing over is also called as exchange of genetic material. This unique process, exchange of genetic material, only takes place in meiotic cell division. Meiotic cell division में क्रॉसिंग ओवर होती है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होती है, माइटोसिस में नहीं होता. दिस इज वेरी वेरी यूनिक इवेंट दैट इज टेकिंग प्लेस इन meiosis. Second thing, when the chromosome are exchanging the genetic material, then this structure is called as tetrad. This structure is called as what? Tetrad. Tetrad structure is formed during meiosis when both the chromosomes are present, something like this. Something like this. Then it will be called as tetrad. Tetrad. Four. Tetra means what? Four. There are four chromatids are present. That's why it is called as tetrad structure. Now moving to the significance of meiosis. What is the significance of meiosis? First thing, during sexual reproduction, the gametes are produced, as we know, and these gametes are produced by meiosis, right? When the germ cells undergo meiosis, they produce what? Gametes. Second thing, conserve the number of chromosomes. If the gamete will contain, if we'll talk about human gamete, if the human gamete will contain, male gamete will contain 46 chromosomes, as well as the female gamete contain the same chromosome, then 92 number of a chromosome will present in the zygote, right? And eventually, the number of chromosomes will double in every generation. But as we know, like in our grandparents, in our parents, and inside our cell, all are having what? 46 number of chromosomes in our cell. So, when a zygote is formed by the fusion of one male gamete and female gamete, the male gamete as well as the female gamete contains half the number of chromosomes, so as to conserve the number of chromosomes in zygote. That's why this kind of a division is necessary. Produce four gametes and four are haploid cells, and that takes place in germ cell. It doesn't mean germ cells never undergo mitosis. They also undergo mitosis. They also increase their number by the process of mitosis. But when one germ cell is producing another germ cell, another two germ cells, then mitosis will take place. But when the germ cell is undergoing meiosis, it will produce what? Gamete. Done? Okay. Now moving to the next slide. नेक्स्ट चैप्टर हमारा यहाँ पे आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट, बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जाती है, ठीक है? तो वो चैप्टर हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे जेनेटिक्स में क्या क्या चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। जेनेटिक्स में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, सबसे पहले टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करेंगे, जो टर्मिनोलॉजी बच्चों को बड़ा डिफिकल्टी जाती है। सबसे पहले जेनेटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड व्हेन वी स्टडी अबाउट द heredity, this is the branch of biology, study of heredity and variation. What is variation? The differences observed among the offsprings. Differences observed among the offspring, that is called as variation. And what is heredity? Heredity, transmission of character from parent to successive generation like offsprings. When the characters are transmitted
or inherited from parents to offspring, then it will be called as heredity. And variation differences, जो हम अपनी भाई बहनों में, ठीक है, भाई बहन भाई भाई बहन बहन, इनके बीच में जो सिबलिंग्स में जो डिफरेंसेस हमें नजर आती है, हालांकि हम जो अपनी मेरा हमारा भाई है या बहन है, हम दोनों के दोनों एक ही पेरेंट्स हैं, बट हमें डिफरेंसेस दिखने को मिलती है, तो उसको बेटा हम क्या कहेंगे, वेरिएशन कहेंगे। नेक्स्ट, कैरेक्टर। व्हाट इज कैरेक्टर? Character, that is the physical feature of an organism. Physical feature like what is color of your hair, what is color of your skin, what is the length of your nose, what is the color of your eye. तो ये जो चीजें होती हैं बेटा, आपका क्या होता है, फिजिकल फीचर होते हैं. दिस फिजिकल फीचर्स आर कॉल्ड एज character, and this physical features have alternative forms also, like not in all person, all human being, the color of hair is black. Some of them, some population of human have black hair color, some of them have brown hair color. So जो brown and black, जो alternate form of the character, these are called as traits. And what is allele? We have already studied what gene. The alternate form of gene are called as alleles. Alternate form of a gene is called as allele. Next, genotype. Genetic combination. Genetic combination. The genetic combination for a character, that will be called as genotype. Phenotype, that is the physical expression. Physical expression. Physical expression is called as phenotype. Homozygous, when according to Mendel, every characters are controlled by a pair of traits or pair of alleles. If in a pair of alleles, both alleles are of the same type, then it will be called as homozygous. And the both pair of alleles are of a different type, then it will be called as heterozygous, like capital T, small t. In pair, they are same. Then it will be called as homozygous. And what is heterozygous? When the pair in the pair of alleles, both the alleles are of a different kind, different type, then it will be called as heterozygous. Like here, there are 7 pair of contrasting traits. Pair of contrasting traits are written in the pea plant. क्या क्या है? सबसे पहले अगर हम बात करें प्लांट का हाइट, उनमें से डोमिनेंट कौन है एंड रिसेसिव कौन है, बेटा इसको याद कर लेना. ठीक है, अभी तक अगर याद नहीं है तो इसको याद कर लेना. इनमें से डायरेक्टली ऐसे पूछा सकता है कि फ्लावर पोजीशन में डोमिनेंट ट्रेट कौन सा है एंड रिसेसिव ट्रेट कौन सा है. इसको मैं उतना इन डिटेल में नहीं जा रहा हूं. ठीक है, नेक्स्ट जो टर्म है डोमिनेंट. व्हाट इज डोमिनेंट? द डोमिनेंट ट्रेट और डोमिनेंट एलील, exactly the allele which express itself, which can express itself, that will be called as dominant, and which cannot express or that can be masked, that can be masked, that will be called as recessive, which will be masked or suppressed, and which is getting express itself, which can express itself, it will be called as dominant. Which cannot express itself, that is suppressed due to presence of other allele, and it will be called as recessive allele. And Mendel did experiment on which plant? Physarum sativum. Physarum sativum, that is the garden pea. That is what? Garden pea plant. Why did you choose pea plant? There are certain conditions, like the pea plant's flowers are bisexual, short lifespan, short life cycle, then the characters, whatever the physical features of the plants were clearly visible in naked eyes, right? तो naked eye में दिख रहा था यहाँ पे, that can be visualized in naked eyes, okay? And 7 pairs of contrasting character traits जो हैं वो already हम देख चुके हैं. Next, moving to the process, how did he complete this experiment, Mendel's experiment? There are 4 methodologies, 4 protocols. Like first one is emasculation. What is emasculation? Removal of anther, removal of male reproductive structure, that is called as anther. When though pea plant is a bisexual flower, if we will remove the male reproductive part, then this process is called as emasculation. And why this emasculation process is done? To prevent self-pollination. To prevent self-pollination. To prevent
self pollination. Next, dusting, transfer of pollen grain. Dusting क्या है? Transfer of pollen grain. Bagging, bagging what? We don't want to mix any other pollen grain with our experiment one. That's why we cover with a poly bag. We cover with a poly bag to prevent unwanted pollination. To prevent unwanted, to prevent unwanted pollination. दूसरा कोई भी टाइप का पोलन ग्रेन आके ना पहुंच जाए, तो इसीलिए पॉली बैग से कवर कर दी जाती है. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज बैगिंग. नेक्स्ट, टैगिंग. व्हिच प्लांट इज क्रॉस्ड विद व्हिच वन? That should be mentioned on that poly bag, and that process is called as tagging. Now, moving to the next slide, that is monohybrid cross. When Mendel took only one pair of traits, or we can call only one character at a time, only one character or one pair of a trait at a time. One character, like if we talk about one character, that is, what is that one character? That one character is tallness, and that is having one pair of traits, that is tall and dwarf. Tall and dwarf, right? तो यहाँ पे क्या हुआ? तो यहाँ पे उन्होंने मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक ही कैरेक्टर लेके उन्होंने क्या किया? क्रॉस करवाया. When he crossed pure tall, that is capital T with pure dwarf small t, that is shown in the diagram, and he called them, this is the parental generation. And when he crossed this capital T with small t, pure tall with pure dwarf, he got F1 generation progeny. Now the question arises here, how will you get F1 generation progeny? By crossing the parental generation. Second thing, what he got? He got heterozygous tall. He got heterozygous tall plant. All the plants were heterozygous tall in F1 generation. And how did he got F2 generation? By selfing F1 plants, by mating F1 plants. The like this plant will produce capital T gamete and small t gamete, male gamete. Similarly, capital T and small t female gametes, though it is bisexual. And if we will draw a Punnett square according to this type of gamete, you will get capital T, small t, heterozygous tall, and this is the dwarf. This F2 generation, what he got in F2 generation? 3 were tall and 1 was dwarf. Then he concluded the phenotype ratio, that was 3:1. What is 3? 3 were tall and 1 was dwarf. Right? And he also concluded the genotypic ratio of F2 generation, that was homozygous tall and heterozygous tall with a homozygous dwarf, that was 1:2:1. That was the genotype ratio. Like this is homozygous tall, these are heterozygous tall, and this is the homozygous dwarf. That was in the ratio of 1:2:1. Right? Now, moving to the laws that was derived from the monohybrid cross. मोनोहाइब्रिड क्रॉस से क्या लॉज निकल का है? दो लॉज निकल का है. आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा. थोड़ा एक बार आप बता दो. ठीक है. फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडलिज्म, फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल एंड सेकंड लॉ ऑफ मेंडल क्या था? First law of Mendel was law of dominance, and second law that was derived from this monohybrid cross. Two laws were derived from monohybrid cross. First one was law of dominance, second one was law of segregation. Law of dominance, what does it signifies? The law of dominance. Law of dominance is dominant character can express in presence of only one dominant allele. एक ही dominant allele चाहिए dominant character को express करने के लिए. ये आप किस टेक्स्ट बुक का डेफिनेशन देख लेना. Law of segregation, the pair traits like capital T small t in the F1 plant, capital T small t traits or capital T small t allele, they will get segregate, they will separate from each other during gamete formation. When the gamete is being produced, at that point of time, this pair of trait will separate or segregate from each other. That is law of segregation. Now moving to the next part, that is the dihybrid cross. Next is your dihybrid cross.
What was in dihybrid cross? The dihybrid cross, when Mendel took two character, or you can say two pair of contrasting trait, two pair of contrasting trait, then it will be called as what? It will be called as what? Dihybrid cross. Mitochondria is called as powerhouse of the cell. This is the question from 9th standard beta. अब 10th में हो, mitochondria is called as powerhouse because it produces energy by using oxygen and glucose or food substances. ठीक है, ये क्लास 9th में mitochondria के बारे में पढ़ा हुआ है. चलो, sorry, dihybrid cross. When Mendel took two pair of contrasting trait, that is seed shape and seed color, seed shape and seed color, सीड शेप ले लेंगे एंड सीड कलर ले लेंगे. सीड शेप बेटा क्या है ना, आपका राउंड है, नहीं तो बेटा आपका क्या हो सकता है, रिंकल. एंड सीड का जो कलर है दैट कैन बी येलो और ग्रीन. एंड द अपर वन इज डोमिनेंट in both cases and the lower one is the recessive in both cases. When he crushed capital R, this homozygous round yellow plant, parent plant with a homozygous wrinkle green, that is small r, small y plant, he got, this is called as parent generation, like in monohybrid cross. He got F1 progeny or F1 generation plant that is written like this. Here the gamete will be capital R, capital Y, here the small y, due to which capital R, capital Y, small y. This is the heterozygous is formed. This one is the heterozygous is formed, right? And to get F2 generation, to get what? F2 generation, अगर आपको F2 generation चाहिए बच्चों, तो आपको क्या करना पड़ेगा, F1 को आपको क्या करना पड़ेगा, सेल्फिंग करनी पड़ेगी. And he got four gametes from this, four type of gamete, four type of male gamete as well as four type of female gamete, right? And that was drawn on Punnett square. And in Punnett square, if you draw, then you will get the phenotype as well as genotype ratio. That the phenotype ratio here was in F2 generation, that was 9 is to 3 is to 3 is to 1. 9 number was round yellow, 3 was round green, 3 was wrinkled yellow, and the 1 was wrinkled green. The four different type of combinations were obtained. Out of this, this was this round yellow and wrinkled green. Round yellow. This one is round yellow, and this is the wrinkled green. These were the parental type. And he got two new combinations, that was round green and wrinkled yellow. Due to which the third law arise, that is what? Law of independent assortment. What law of independent assortment says? Law of independent assortment says the paired factor or paired alleles, or you can write inheritance of, you can write like this, inheritance of or distribution of alleles of one pair of character, one character is independent of another. ये टेक्स्ट का डेफिनेशन देख लेना, ठीक है. Inheritance or distribution of alleles of a character is independent of distribution of another character. एक कैरेक्टर का, ये एक कैरेक्टर है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो एलेल्स होंगे, राउंड एंड रिंकल का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो येलो एंड ग्रीन के ऊपर डिपेंड नहीं करने वाला. Means round can be present with yellow as well as round can be present with green. Similarly, wrinkle can be present with yellow and wrinkle can be also present with green. That's why these four combinations are good, obtained from the F2 generation. Now, moving to the next slide, that is application of Mendel's law. Yeah, Mendel, whatever Mendel found
that was how this can be applicable on different cases. That is, first one, you have to remember this one that can be asked in the exam. That is new combination of progeny with hybrid. When you want to develop a hybrid, then we have to follow Mendel's law. Second thing, to produce better breeds. Better breeds. Next, mutation. What is mutation? Mutation is sudden abnormal change. Sudden abnormal change in gene, and the causative agents of mutation. These are the causative agents are called as mutagen. And due to mutation, like sickle cell anemia like disease are caused due to mutation. And the second thing, what are the other mutagens? Other mutagens like UV rays, beta rays, X-ray, गामा रेज, जो कि आपका रेडियो एक्टिव रेडिएशन के अंडर आते हैं. They all are mutagen. They can cause what? Mutation. Abnormal sudden change in genetic sequence. That is called as mutation. Now moving to the next part. That is the inheritance. What is inheritance? Inheritance, we have already discussed transmission of character from parents to offspring. There are two types of inheritance, that is autosomal and sex-linked. Like out of 46 number of chromosome, out of 46 chromosome, we can write like this: 22 pairs of autosomes plus XX in case of female, and 22 pairs of autosomes plus XY in case of male. And these 22 pairs of chromosomes are known as what? Autosomes, and the last pair is known as sex chromosome. If the gene is present on the autosomes and that is being inherited to the next generation, it will be called as autosomal inheritance. If the gene is present on the sex chromosome, then it will be called as sex-linked inheritance. On sex chromosome, there are two types of sex chromosomes are present, that is X and Y. The two types of X chromosomes are present. So, in our syllabus, only sex-linked inheritance characters are given. Like the X-linked inheritance is hemophilia and colorblindness, in which both the disease or both the defects are caused due to the mutation and caused due to the recessive allele. Like color blindness, you cannot distinguish between red, green, blue. Like this is the Ishihara chart. This is Ishihara chart, which is used to check a person is whether colorblind or not. Second thing, hemophilia. In hemophilia, what defects occur? Here, delay in clotting of blood or no clot of blood. If there is any kind of injury, normally the blood clots. But if a person is suffering from hemophilia, or if a person is having the gene for hemophilia, recessive gene, then he or she will suffer from this kind of blood loss due to no clotting, delay in clotting. So, if we talk about the color blindness, then there will be three type of combination you will observe in case of female, and two type of combination you will observe in case of male. Like if we talk about the colorblind gene, that is small c, if that is present on the both the X chromosome, in that condition the female will suffer from colorblind, and this is the carrier, and this is the normal female, and this is the normal male. And here if the c, that is the small c recessive gene for the colorblind is present, this male will be colorblind son or colorblind male, and this will be colorblind female, right? This will be colorblind female, right? Now moving to what? This hemophilia. For hemophilia you can replace C by small h. Small h represent hemophilia and small c represent what? Color blindness. Done. Now, second thing, the most important question, why this X-linked disorders are more common in males as compared to female? आपको ज्यादातर मेल में देखने को मिलेगा ये डिसऑर्डर या डिफेक्ट, मेल में ज्यादा देखने को मिलेगा फीमेल के कंपेरिजन, बिकॉज
The male have only one X chromosome, and this gene, the character or the gene for this particular character, this particular trait is present on X chromosome only. And the males have only one X chromosome. Whatever the gene will be present on that X chromosome, that will get expressed. So males are more prone, or this kind of disorders are seen in males more as compared to females. Next thing, that is Y-linked disorder, that is called as, this is another type of sex-linked inheritance, because the Y chromosome comes under X chromosome and Y chromosome both comes under what? Sex chromosomes. These are what? Sex chromosomes, right? Y-linked character. Another character we are talking about here, that is hypertrichosis, that is excess hair on ear pinna. Excess hair on ear pinna. That is called as hypertrichosis. And if a father is having excess hair on his ear pinna, then his son will also must have excess hair on his ear pinna, because this kind of gene is present on Y chromosome. And as you see, Y chromosome, if the Y chromosome is present in grandfather, and that will transmit it to father, and that will also transmit it to son, grandson, right? Like this, the inheritance takes place. Means hypertrichosis follows this kind of inheritance. Done. Now moving to the next part. The next chapter is your absorption by root. यहाँ पे क्या क्वेश्चन आने वाला है? यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस और व्हाट इज द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ रूट हेयर. रूट हेयर का क्या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल बहुत थिन होता है, जिसके वजह से इजीली एब्जॉर्प्शन होता है. सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाती है. क्या हो जाती है यहाँ पे? सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाती है. एनोरमस सरफेस दैट प्रोवाइड एनोरमस सरफेस एरिया. एंड साइटोप्लाज्म जो होती है इसका, साइटोप्लाज्म इज हाइपरटोनिक, that have more concentration, that is more concentrated as compared to the surrounding soil water. जो आजू बाजू में सॉइल वाटर है उसके कंपैरिजन में यहाँ पे कंसेंट्रेशन क्या होगा? ज्यादा होगा, हाई कंसेंट्रेशन है, so that it can absorb water, it can absorb what? Water from the surrounding part. Now, moving to the types of transport. How many different type of transports are there? There are two different type of transports, that is active transport and the other one is passive transport. Passive transport without expenditure of energy and active transport by consumption or expenditure of energy. This passive transport is of further three types: diffusion, osmosis and imbibition. Diffusion, if we talk about the diffusion, take one glass of water, put some drop of ink here. That you will see this will spread after 30 minutes, it will spread throughout the water. That is diffusion. Scent particles, scented particles that also distributed throughout the room. This is called as diffusion. Next, osmosis. What is the definition of diffusion? You have to properly write this one. Diffusion definition, and second diffusion definition of osmosis. Here, this is a special case of diffusion in which semi-permeable membrane is required. Like, to diffusion occur, if you want to do the process of diffusion, then you must keep the two things in contact. Like, this is the colored solution and this is the water. For diffusion to occur, both the things should be in direct contact. Second thing, osmosis. When the movement of solvent molecules, here only solvent molecules are taking place through a semi-permeable membrane from high to low concentration, then it will be called as osmosis. And what is imbibition? When the solid surfaces, or hydrophilic substances absorb water particles, solvent molecules, then it will be called as imbibition. Imbibition, like imbibition of water takes place by wooden doors, सीड कोट, जिसके वजह से आपकी सीड कोट हो गया या वुडन डोर्स हो गया, द swells up in monsoon या rainy season. Similarly, seed coat will swell up when they are kept in
solution or when they are kept in water, not solution, water. Second thing, that is the active transport. What is exactly passive transport here? If we talk about the passive transport, then we can understand the active transport. You can understand like this: if you are moving on a flyover, like from this point to this point, this is the point A, this is the point B, this is the point C. अगर आपको यहाँ से इधर जाना है, you have to invest some energy. तो आपको एनर्जी देना पड़ेगा, बिकॉज यू आर मूविंग फ्रॉम द लो टू हाई. एंड जब आप हाई टू लो, बी टू सी में जब आप आओगे, यहाँ पे आपको कोई एनर्जी देने की जरूरत नहीं है. तो यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट है. इसको बेटा कहेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसको बेटा कहेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट. Now, active transport, when the movement of particles takes place from a region of lower concentration to higher concentration by utilizing energy in form of ATP, then it will be called as active transport. Now moving to the root here silent feature, already I have told you कि इसमें जो सेल वॉल है थीन होगा, कंसेंट्रेशन जो होगा आपका हाइपरटोनिक होगा, ठीक है. तो आपका यहाँ पे एनरोमस सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रहा है ये, ठीक है. एंड अनदर थिंग दैट मे आस्क, दिस रूट हेयर्स आर द मॉडिफिकेशन ऑफ व्हिच सेल्स? दीज आर एपिडर्मल सेल्स. एपिडर्मल सेल. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट. How many types of membranes are there? There are 4 type of membranes are there. Impermeable, like if we talk about impermeable membrane, what will be the example? The example will be glass, that will be polythene. Permeable, that is cell wall, that will allow everything through it. Semi-permeable, that will allow water, solvent particles through it. Like example they may ask, क्या example है यहाँ पे? Cellophane paper, cellophane paper है, parchment membrane है, गोट ब्लैडर है, एंड विस्किंग बैग है, जो कि बना होता है आपका किससे? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. नेक्स्ट, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, also that is called as differentially permeable membrane, that controls the entry and exit of the cell, that is the cell membrane or plasma membrane. बट हम जब भी एक्सपेरिमेंट करते हैं ऑस्मोसिस के ऊपर, तो हम सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन तो मिलेगा नहीं, तो इसलिए हम मार्केट से कौन सा लेते हैं? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लेते हैं, राइट. तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि विस्किंग बैग है या एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आपको यहाँ पे दिख रही है. दिस इज द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. एंड अंदर बेटा आपका क्या है? शुगर सोल्यूशन है. बाहर जो है वाटर है. अब वाटर का मूवमेंट आपका कैसे होने वाला है? बाहर से अंदर जाने वाला है, जिसके वजह से यहाँ पे वॉल्यूम जो है इनिशियल लेवल से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, वॉल्यूम आपका इंक्रीज होने वाला है. अब क्वेश्चन है कब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा? जब तक दोनों साइड में ऑस्मोटिक प्रेशर आपका क्या नहीं हुआ है? इक्वल नहीं हुआ है. तो अगला जो टर्म है बेटा आपका क्या है ना? till how much time या how long time osmosis will take place? Till the osmotic pressure on the both side becomes equal. How will define the osmotic pressure? Osmotic pressure is the minimum pressure applied. किसके ऊपर अप्लाई करेंगे? अप्लाइड ऑन हाइपरटोनिक सोल्यूशन, क्योंकि हाइपरटोनिक सोल्यूशन ही वाटर खींच रहे. तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन टू प्रिवेंट द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस. देखो बेटा, इधर से वाटर आपका अंदर जा रही है, बाहर से अंदर जा रही है, एक फोर्स होगा. अगर हमने यहाँ पे उतना ही फोर्स अप्लाई कर दिया, उतना प्रेशर अप्लाई कर दिया, प्रेशर इक्वल टू क्या होती है बेटा? फोर्स अपन यूनिट एरिया ही तो होता है. तो उतना प्रेशर अगर यहाँ पे अप्लाई कर दिया, तो आपका यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल आपका अंदर नहीं आएंगे, बाहर से, जिसकी वजह से प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी. एंड दैट प्रेशर इज डिनोटेड एज व्हाट? ऑस्मोटिक प्रेशर. if the applied pressure is more than the osmotic pressure, then what will happen? जो हम यहाँ पे प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, अगर वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हो गया तो क्या होने वाला है? अब वाटर रिवर्स डायरेक्शन में मूव करने वाले हैं. अब वाटर यहाँ से बाहर निकल आएगा, तो उसको बेटा क्या कहेंगे? रिवर्स ऑस्मोसिस. दैट इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ. दैट इज ऑल्सो रिटन एज आरओ. आपकी वाटर प्यूरिफायर में लिखा होता है आरओ. डीसैलिनेट सी वाटर. सी वाटर से पानी, प्योर वाटर चाहिए हमें, तो ऐसे कंडीशन में
हम लोग क्या करते हैं, डीसैलिनेट करते हैं बाय यूजिंग दिस मेथोडोलॉजी, दैट इज रिवर्स ऑस्मोसिस। Next, types of osmosis. There are two types of osmosis. First one is endosmosis and second one is exosmosis. When movement, inward movement of particles are taking place. What is taking place? Inward movement of particles are taking place. This is the cell. You can see here. This is the cell here. And when the cell is placed in hypotonic solution, inward movement, the net movement of particles or water is taking place from outside to inside. This will be called as endosmosis. And due to continuous endosmosis, the cytoplasmic volume will increase and cell will reach a state that is called as turgid state. And due to endosmosis. And when continuous exosmosis is taking place, means water is moving out of the system or a cell, continuous exosmosis will cause a cell stage that is called as plasmolysis, extensive loss of water. And if a cell is placed in normal solution, isotonic solution, then it will have the equal size. Whatever the number of water is being lost, the same amount of water is being gained. Means endosmosis is equal with exosmosis. Then the cell condition will be called as placid. Done. But आपके टेक्स्ट बुक में कुछ इस तरीके से दिया गया है. When a cell is placed in hypertonic solution, it will lose its cytoplasmic volume. It is called, initially it will be called as placid, and later on this stage, when the continuous exosmosis will take place, and the cell stage will be called as plasmolysis. Initial stage will be called as placid, and later on this stage that will be called as plasmolysis. Like next thing, that is the types of solution. यहाँ से हट गया है, मैं थोड़ा लिख देता हूँ यहाँ पे. There are three type of solutions are present. That is isotonic, hypertonic, and hypotonic. When we are comparing two solutions, we are having two solutions in our test tube or in our glass. We are having solution A and the solution B. If both the solution have the same concentration, then it will be called as isotonic. If concentration of A is more than concentration of B, then A will be called as hypertonic. Hyper means more concentrated, and B will be called as hypo, means less concentrated. This is less and this is more. This is a comparative quantity, comparative term. Done. Now, next, turgidity, flaccidity, and plasmolysis we have already discussed. Now, moving to the next point, that is turgor pressure. When a cell is placed in hypotonic solution, which solution? When a cell is placed in hypotonic solution, this is the cell that is placed in hypotonic solution. Inward movement of water takes place continuously, means endosmosis taking place continuously, and the cell stage is called as turgid. And right then, the cell content or the volume of the cytoplasm, yeah, the content of the cell will exert a pressure on the cell wall, that will be called as turgor pressure. And what is, how we'll define this turgor pressure? Turgor pressure is the pressure exerted. Turgor pressure is the pressure exerted by exerted by exerted by whom? Exerted by the cell content on side cell wall. सेल वॉल के ऊपर एक प्रेशर एग्जर्ट हो रही है, किसके द्वारा? ना कंटेंट ऑफ साइटोप्लाज्म के द्वारा. दिस विल बी कॉल्ड एज व्हाट? योर टर्गर प्रेशर. एंड सेम टाइम व्हेन द सेल इज इन टर्गर स्टेट, एट द सेम टाइम what happens? The same force, the magnitude will be same, but that will be in opposite direction. The cell wall will put a pressure, apply a pressure on cytoplasm, that will be called as wall pressure. What is wall pressure? Wall pressure is the pressure. Wall pressure is the pressure exerted by cell wall on cell content. That is opposite. Means here turgor pressure and wall pressure both are equal and in opposite direction. Right. Now moving to deplasmolysis. When a cell is plasmolized means excess loss of water is already taken place. Means shrinkage of protoplasm has already taken place. If you want to bring that cell to normal stage, then put in water. Put that plasmolized cell in water. When you will put a plasmolized cell in water, this will again regain, that will again, or no osmosis of water will take place,
due to which again the volume of cell content will increase and that will reach a condition that is flaccid condition, and further it will move to turgid condition, and this process is called as deplasmolysis. When a plasmolysed cell, when a plasmolysed cell, plasmolysed cell placed in where placed in water, then what will happen? This process will be called as deplasmolysis. Next, एप्लीकेशन ऑफ टर्गर प्रेशर, इसको याद रखना है आपको, क्या क्या एप्लीकेशन है टर्गर प्रेशर के। टर्गर प्रेशर के कुछ एप्लीकेशन यहाँ पे आपको दिए गए हैं, ठीक है, जो कि आपके टेक्स्ट के हैं। सबसे पहले तो टर्गर मूवमेंट है, लाइक मूवमेंट ऑफ लीव्स और मूवमेंट ऑफ वीनस फ्लाई ट्रैप, ट्रैपिंग मैकेनिज्म जो है, ठीक है, तो वो आपका टर्गर मूवमेंट होती है। मीमोसपोडी का टच मिनट प्लांट रूट प्रेशर क्रिएट करता है ड्यू टू एंडोस्मोसिस। देन आपका क्या होती है, पुश द हार्ड ग्राउंड व्हेन द रूट पेनिट्रेट इनटू द सॉइल और हार्ड सरफेसेस कंक्रीट्स that can break even the concretes. This is due to turgor pressure. Next, regulation of stomatal opening. Stomatal opening को regulate करना, कब open करना है, कब close करना है, that is also due to the turgorness or turgor pressure of guard cell. Then provide rigidity to soft tissues. The plant which are having soft parts like leaves, they also become turgid due to endosmosis of water, due to turgidity of the cell. These are the applications of turgidity. These are the applications of turgidity. Now, moving to the next part, that is bleeding. Bleeding. What is bleeding? Actually, when actually injured part of the plant release some cell sap, that will be called as bleeding. Second thing, what? Guttation. Guttation is what? When excess root pressure is there, means abundant availability of water is there. सॉइल में बहुत ज्यादा पानी है, तो एंडोस्मोसिस ऑफ वाटर होगा, होने के बाद क्या होगा, रूट प्रेशर क्रिएट होगा और वो अपवर्ड पुशिंग ऑफ वाटर होगी, तो जिसके वजह से आपका क्या होती है ना, जो हाइडाथोड्स हैं, कौन है बेटा आपका यहाँ पे, हाइडाथोड्स हैं, तो हाइडाथोड्स के थ्रू आपका क्या होगा, वाटर आपका बाहर आएगा, सेल से आप मूव्स आउट थ्रू हाइडाथोड, स्पेशल स्ट्रक्चर दैट इज हाइडाथोड। हाइडाथोड के थ्रू जो बाहर आएगा इसको हम क्या कहेंगे, गटेशन। जाइलम कंडक्ट्स वाटर, फ्लोएम कंडक्ट्स फूड। तो यहाँ पे एक गार्डलिंग एक्सपेरिमेंट होती है फ्लोएम के लिए, फ्लोएम के लिए गार्डलिंग एक्सपेरिमेंट होती है, ये ध्यान रखना है, रिंगिंग एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। जाइलम कंडक्ट वाटर, उसके लिए एक तो बेटा आप ईओसिन वाला सोल्यूशन लेके यूज कर सकते हो। जब ईओसिन सोल्यूशन में बैल्सम प्लांट को रखा जाएगा, इसको बैल्सम प्लांट को रखेंगे, तो क्या होगा ना, बैल्सम का स्टेम को जब आप क्रॉस सेक्शन लेंगे तो उसमें अंदर वाला पार्ट जो है, जो अंदर वाला पार्ट यहाँ पे, तो आपको अंदर वाला पार्ट जो है आपको क्या मिलेगा बेटा, आपको यहाँ पे अंदर वाला पार्ट आपको क्या दिखेगा, रेड कलर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ड्यू टू कंडक्शन ऑफ वाटर बाय द जाइलम, एंड ईओसिन जो होता है रेड कलर का होता है, ठीक है। दूसरा एक्सपेरिमेंट है कि स्टेम को क्या करेंगे ना, उसका जो जाइलम है उसको निकाल देंगे। कैसे, कैसे निकालेंगे, ये बेटा देखो इस स्टेम है, तो इसका ये वाला पार्ट को निकाल दी जाती है, मतलब जाइलम को निकाल दी गई, तो जिसके वजह से आपका क्या होगा, वाटर का अपवर्ड कंडक्शन नहीं हो पाएगा, तो जिसके वजह से क्या होगा, जो शूट है, जो लीव्स हैं, दे विल स्टार्ट विल्टिंग, और एंड नेक्स्ट shoot will die first. And in ringing experiment for phloem, root will die first due to lack of food, because this food are being deposited in this part due to lack of conduction of phloem, because phloem is present outside, xylem is present inside. तो हमने जब रिंगिंग एक्सपेरिमेंट किया तो फ्लोएम को कट करके निकाल दिया, फर्दर फूड का कंडक्शन नहीं हो पा रहा, रूट तक नहीं पहुंच पा रही है, तो जिसकी वजह से आपका यहाँ पे क्या होगी, आपका रूट डाइज फर्स्ट, इसलिए बल्जिंग हो रही है वहां। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फोर्सेस कंट्रीब्यूटिंग ascent of sap. Root pressure, pressure exerted in root system, and that is only responsible for upward conduction of water up to 10 centimeter only. Second thing your is capillarity. Capillarity, that is the narrow tube. That is what? Narrow tube. When there is a narrow tube, due to the radius or the diameter of the capillary,
and water conduction or upward rise of water takes place. Upward movement of water takes place due to the diameter, and here the rise of water in the capillary is inversely proportional to the diameter of the capillary. Next, cohesion adhesion force between like molecule cohesive force होती है, अनलाइक मॉलिक्यूल्स के बीच में एडिसिव फोर्स होती है। मींस क्या है कि जो फोर्सेस कंट्रीब्यूटिंग एडेड पेशेंट से आपकी बात कर रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि इनकी कोई जरूरत नहीं है, पहले से इनकी जरूरत है, बट दे आर नॉट सफिशिएंट, दे आर रिक्वायर्ड बट दे आर नॉट सफिशिएंट। द सफिशिएंट फोर्स इज बीइंग क्रिएटेड बाय द ट्रांसपिरेशन पूल, that is being created by transpiration pool, and this transpiration pool is being created due to excess loss of water from the shoot area। जब शूट एरिया से वाटर लॉस होती है, ठीक है, तो क्या होती है, ये मान लो बेटा आपका शूट एरिया है और ये बेटा आपका रूट एरिया है, जब यहां से एक्सेस लॉस ऑफ वाटर होगी, तो इस वाटर को सब फुलफिल करने के लिए तो आपका क्या होगा बेटा, आपका जाइलम के थ्रू वाटर को मतलब आपका अपवर्ड कंडक्शन की जाएगी। एंड सिमिलरली जो रूट हेयर्स है या जो रूट है, उनके पास वाटर की डेफिशिएंसी होगी और वो वाटर क्या करेगा ना, सॉइल से लेगा। तो यहाँ पे ड्यू टू ट्रांसपिरेशन a pressure is created, negative pressure is created, that is called as suction force. Suction force is created, and which is a negative force. Root pressure is positive, keep in mind, root pressure is positive, but transpiration pull is negative, keep in mind. Due to transpiration pull, this upward conduction of water takes place even if the plant height of the plant is more than 100 meters also. This is sufficient one for the upward conduction of water. आपको पूछा जाएगा among these four forces which one is sufficient या most accepted, that is transpiration pull. Next chapter is your transpiration. Transpiration, as we know, what is transpiration? Transpiration is excess loss of water. Transpiration is excess loss of water. कहां से excess loss होगा? From the aerial part of the plant. Aerial part में कौन सी चीज आती है? तीन चीजें आती है। एक तो बेटा आपका स्टोमाटा होता है, एक आपका क्यूटिकल होता है, एक लेंटिकल होता है, लेंटिसेल। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, स्टोमाटा जो होता है बेटा डायनामिक ओपनिंग होता है, बिकॉज देयर समवॉट दैट रिमेन्स ओपन एंड सम टाइम दैट रिमेन्स क्लोज, इसलिए इसको डायनामिक ओपनिंग कहते हैं। बट जो क्यूटिकल है एंड जो आपका लेंटिसेल्स है, these are static opening, they are present always. Lenticell is always open, always remains open, that's why it is called as static opening, and stomata is dynamic opening. ज्यादातर मोस्टली the loss of water transpiration होती है, that is which type, that is due to stomatal type. stomatal type of transpiration सबसे ज्यादा होती है बेटा, ठीक है, एंड सबसे कम बेटा कौन सा होता है आपका, लेंटिकुलर टाइप का होता है, ठीक है, जो लेंटिसेल के थ्रू, एंड वेयर दिस लेंटिसेल्स आर प्रेजेंट, these are present on the woody stem. And where the stomata are present, stomata are present on the generally on the lower surface of the leaf, lower surface of the leaf in dicot. If we talk about monocot, they are present on the both the surface, upper surface as well as lower surface. तो इसका मीनिंग ये निकल के आया कि मोनोकट में ट्रांसपिरेशन का रेट ज्यादा होगा डाइकट के कंपैरिजन। नेक्स्ट, मेजरमेंट, कैसे मेजर करेंगे ट्रांसपिरेशन? जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे ट्रांसपिरेशन हो रही है, अब रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे कि वाटर लॉस पर यूनिट टाइम, वॉल्यूम इन लीटर पर यूनिट टाइम, पर टाइम अगर हम बात करें मिनट्स में, सेकंड्स में, आवर में, तो सबसे पहले हम वेइंग मेथड यूज करते हैं। यहाँ पे कौन सा मेथड? वेइंग मेथड यूज करते हैं, वजन करते हैं। प्लांट को ले लिया टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसका पूरा वजन कर लिया, 1 घंटे सनलाइट में रखा, उसके बाद फिर से वजन कर रहे हैं, तो उसमें हम देख रहे हैं कितना वाटर लॉस हुआ, तो जितना वाटर लॉस हुआ उतना एब्जॉर्ब किया होगा। और यहाँ पे उस चीज को कंफर्म करने के लिए एक टेस्ट ट्यूब के ऊपर एक ऑयल का लेयर भी हमें यहाँ पे देना पड़ता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अगर हम देखें किस प्रकार के एक्सपेरिमेंटल सेटअप करनी पड़ेगी, ये बेटा आपका टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, ये बेटा आपका यहाँ तक वाटर है, दिस इज द प्लांट, एंड यू हैव टू प्लेस a layer of oil on the surface of water to prevent what? Evaporation. Prevent what? Question आएगा, why the layer of oil is present? To prevent what? Evaporation. Next, photometer method. There are two type of photometers, simple photometer and Gannx photometer. Photometer is an instrument that is used for the measurement of rate of transpiration, and specially they will ask question on Gannx photometer.
If we talk about the Gannon's photometer, there are two things they will ask. First one is precaution. What is the precaution of Gannon's photometer? In the twig should be watertight and twig should be cut obliquely. Twig should be cut obliquely to increase surface area, to keep living, to keep that twig remain alive for more time. Second thing, that is a limitation. They will ask limitation of Gannon's photometer. First one, introduction of bubble is very, very difficult. Second thing, twig will not remain alive for longer period of time. ज़्यादा time तक twig जो है जिंदा नहीं रहने वाला है. थर्ड, अगर बाहर टेम्परेचर की अगर कोई चेंजेस होती है तो बबल का जो मूवमेंट है उसमें आपका चेंजेस होगा. और एक क्वेश्चन आएगा गैनेक्स फोटोमीटर में, व्हाई द रिजर्वर ऑफ वाटर इज देयर. द रिजर्वर, व्हाट इज द रोल ऑफ द रिजर्वर. द रोल ऑफ रिजर्वर is to push the bubble to its initial position to take another reading, or to take another observation. That is the role of the reservoir here. Now moving to the next part. हैंग हो रहा है. नेक्स्ट, ट्रांसपिरेशन में स्टोमाटा का जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग है, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा टेक्स प्लेस ड्यू टू two things, that is the K plus ion theory and the second one is sugar concentration theory. There are two theories behind the opening and closing of stomata here. I think everyone is getting, सबको समझ आ रहा होगा. अगर आपको कुछ डाउट्स आ रहे हैं तो आप पूछ सकते हो. ठीक है, तो अगले अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे कि K plus ion theory and sugar concentration theory. दोनों की वजह से आपका क्या हो रही है ना, गार्ड सेल विल बिकम टर्जिड एंड दैट विल ओपन. अगर गार्ड सेल टर्जिड होगा तभी ओपन होगा. दिन में ड्यूरिंग डे टाइम more number of K plus will be imported into the guard cell because guard cell have to do the process of photosynthesis. And for photosynthesis, guard cell needs what? And for photosynthesis, in every wherever the cell is that is performing the photosynthesis, that needs potassium ion. When the K plus ions are imported into the guard cell, the cytoplasmic concentration will become hypertonic. And when the concentration will become hypertonic, it will absorb or it will absorb water from the surrounding cells by the process of osmosis. Due to which the guard cell will become turgid. And when the guard cell becomes turgid, that will open the stomata. Second thing, here your second theory is your sugar concentration theory. At night, sugar is not synthesized. Whatever the sugar are synthesized during the daytime, these are reserved in form of a starch. So during night, what will happen? This starch will be broken down or hydrolyzed into sugar. Starch never increase the concentration of the solution, but the sugar always increase the concentration of solution. When the starch are converted into sugar inside the guard cell, because guard cell is a living cell that also need energy. So the concentration inside the guard cell of sugar will increase at the night. So it will again become hypertonic. So again it will absorb water from its nearby cell, that is the subsidiary cell. So the guard cell will become turgid and again the stomata will open. अगर यहाँ पे कुल मिला के पूरा ब्रीफली अगर बात करें, यहाँ पे क्या है, बात यह है कि स्टोमाटा को ओपन करना है. दिन में भी करना है, रात में भी करना है, क्योंकि गैसियस सेक्शन तो करना है. ट्रांसपिरेशन करना है नहीं करना, दैट इज सेपरेट थिंग, बट गैसियस सेक्शन तो बेटा करना है. तो गैसियस सेक्शन करने के लिए स्टोमाटा शुड रिमेन ओपन. Second thing, what are the factors that affects the rate of a transpiration? The factors that affects the rate of a transpiration, there are two factors. First one is your external factor and second thing is your internal factor. External factor, intensity of light. If the intensity of light will increase, the rate of photosynthesis will increase. For that purpose, stomata should remain open, and due to opening of stomata, loss of water will take place, due to which the rate of transpiration will increase. That is directly proportional. Second thing, temperature. If the temperature increase, plant have to cool down itself.
So it have to lose more and more water. The rate of transpiration also increase. Next, wind velocity. Wind velocity बढ़ेगा तो rate of transpiration भी बढ़ेगा. Third thing, humidity. यहाँ पे reverse होने वाला है. क्या? अगर humidity बढ़ जाती है, if there are more number of water vapors are present in atmosphere, then loss of water vapor from the leaf surface will be less. Like if we'll correlate this thing with an example, during monsoon, during rainy season, जो हमारे क्लॉथ है, जो कपड़े हैं, वो जल्दी सूखते नहीं, बट विंटर में सूख जाते हैं, क्योंकि विंटर में क्या होती है, ड्राई कंडीशन, हमारी स्किन भी ड्राई हो जाते हैं, राइट, इसलिए तो मॉइस्चराइजर यूज करते हैं. मतलब जब मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज्यादा होगा एटमॉस्फेयर में, तो उस टाइम में रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगी. कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड का सर्टेन कंसेंट्रेशन आपका रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा, क्योंकि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बढ़ती है. एक सडन कंसेंट्रेशन के बाद नियर अबाउट 0.05% यहाँ पे क्या होगा, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन सडनली डिक्लाइन होगा, क्योंकि स्टोमाटा क्लोज हो जाएगी. एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जैसे हम हायर एल्टीट्यूड में जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, घटेगा, तो वहां पे रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा. और अगर हम प्लेन्स में रहेंगे तो वहां पे बेटा क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है, तो वहां पे रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम होगा. इसीलिए हायर एल्टीट्यूड में जो प्लांट्स होते हैं, उनके जो लीव्स होता है वो नीडल शेप होता है. जैसे कोनिफेरस ट्री की बात करें, जिम्नोस्पर्म्स, उनके जो लीव्स होते हैं, इसीलिए एक एडेप्टेशन उनके अंदर आ गया है, बिकॉज दे आर प्रेजेंट एट हायर एल्टीट्यूड. रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन एट हायर एल्टीट्यूड इज मोर due to atmospheric pressure is decreasing, rate of transpiration increasing. So to prevent the rate of transpiration, they have a certain kind of adaptation, like narrow leaves, needle-like leaves. Next, the internal factor, that is water content. If the water content is more, that will lose more water. If the water content is less, it will not lose more water. It cannot lose water, क्योंकि ये water loss को tolerate नहीं कर सकता. Second thing, significance. What is the significance of transpiration? First one, cooling effect. जब टेम्परेचर बढ़ जाती है तो कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, बिकॉज इवापोरेशन causes cooling effect. Second thing, suction force, it creates a suction pressure, that is the transpiration pool. Due to this transpiration, upward conduction of water takes place. Third thing, distribution of water and mineral. Whatever the water and minerals are being absorbed in the root system, that should be distributed throughout the plant, and that is only possible due to the process of transpiration. Next, adaptation. What are the different adaptations are seen in different plants so as to minimize the rate of a transpiration? अगर ट्रांसपिरेशन को मिनिमाइज करना है, कम करना है, तो फिर प्लांट के पास क्या क्या एडेप्टेशन होना चाहिए? जैसे कि सबसे पहले सनकेन स्टोमाटा, जीरोफाइट्स, जो आपके डेजर्ट में जो प्लांट्स होते हैं, इनके पास सनकेन स्टोमाटा होता है. स्टोमाटा आर प्रेजेंट समवॉट इनसाइड द स्टेम. Second thing, fewer stomata, less the number of stomata, less with the water loss. Third thing, narrow leaves. If the leaves will become narrow, then the surface area, exposed surface area will decrease. If the exposed surface area decrease, then the loss of water will also decrease, the rate of transpiration will also decrease. Reduced exposed surface area, the same thing. Loss of leaves during summer, yeah, post winter, sorry, the loss of leaves takes place because at that point of time there is less rain, precipitation, जिसके वजह से पानी कम होने के कारण प्लांट क्या करता है, अपनी लीफ को ही झाड़ देता है. ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी. लीफ नहीं रहेगा तो ट्रांसपिरेशन कहां से होगा? ठीक है. लास्ट आपका क्या बेटा, आपका थिक क्यूटिकल. इफ द थिकनेस ऑफ क्यूटिकल इज मोर, then there will be very less loss of water will take place, right? These are the adaptation of transpiration. Next chapter that we are moving towards, that is the photosynthesis. In photosynthesis, what we are looking here, this is the structure of, you have to remember this one, this is the structure of chloroplast. Chloroplast की लेवलिंग आपको आनी चाहिए, outer membrane, inner membrane, grana, stroma, then आपका granum, thylakoids, ये सारी चीजें याद होनी चाहिए. And where the light reaction is taking place, granum. Where the dark reaction is taking place, stroma. Stroma में है आपका dark reaction के लिए enzymes. तो स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट आपको आना चाहिए. ग्राना का स्ट्रक्चर आना चाहिए. ग्राना, व्हाट इज ग्राना, हाउ विल डिफाइन ग्राना? ग्राना इज अ स्टैक ऑफ thylakoid, stack of thylakoid. Second thing, that is your stroma. Stroma is the matrix that is present inner to
inner membrane. Inner to inner membrane. Now, what are the factors affecting photosynthesis? What are the factors? Light intensity. If the light intensity will increase, the rate of photosynthesis will also increase up to certain limit. In high light intensity, the chlorophyll will damage. That is called as solarization. That process is called as solarization. This is not in your syllabus, leave it. Now, carbon dioxide concentration. If the concentration of carbon dioxide will increase, at the same time, the rate of photosynthesis will also increase, but up to certain limit, like we'll discuss in transpiration. Next, temperature. Same thing. The best optimum temperature for photosynthesis is 25 to 30 degrees Celsius. If the temperature increases, initially the rate of photosynthesis increases. Like there is a correlation in every 10-degree rise in temperature, the rate of photosynthesis doubles. हर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसमें क्या होगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होती है, डबल होती है. But that also up to certain limit, that is 35 to 40 degrees Celsius, not beyond that. Because at high temperature the enzymes destroyed. That's why the rate of photosynthesis or the photosynthesis process will stop. Next, water content. More the water present, more the rate of photosynthesis will be there. Chlorophyll, protoplasm, both are needed for your photosynthesis process. More the protoplasm means cell is living, cell is metabolically active, that will do the process of photosynthesis more. And the chlorophyll, if the number of chlorophylls are more, then the rate of photosynthesis also become more. Now, moving to the light phase and the dark phase. In light phase, three things you have to remember. That is the activation of a chlorophyll. First thing that takes place during light reaction or light phase or light dependent phase, that is the activation of chlorophyll. Second thing you have to remember, that is very, very important, that is the splitting of water molecules. The splitting of water molecules, and due to the splitting of water molecules, oxygen is released from the water by the split in the presence of light. That's why it is called as That's why it is called as what? The splitting of water molecule or your photolysis of water. This is also known as photolysis of water. Next question. Next बेटा आपका यहाँ पे है क्या है? Photophosphorylation means addition of phosphate takes place to ADP. ADP से ATP बनना, ठीक है? Photophosphorylation, ATP and NADPH2. Two things are being produced here during light reaction, and these ATP and NADPH2 are utilized in the dark reaction or dark phase, that is called as Calvin cycle. Calvin cycle is also known as C3 cycle because the first stable product is a 3-carbon compound, that is PGA, phosphoglyceric acid. And the carbon, the three steps are there in dark reaction, dark phase. First one is carbon dioxide fixation. This is a very, very crucial phase because the carbon dioxide, the gaseous molecule, will be converted into a compound, that is phosphoglyceric acid, PGA, in the presence of one enzyme, that is the world's most abundant enzyme, that is Rubisco. Second thing, reduction. Reduction process takes place, and the third thing is regeneration of RUBP. दो तीन चीजें यहाँ पे जिनकी फुल फॉर्म आपको याद रखना है. एक तो NADPH2, दूसरा बेटा आपका रूबिस्को, तीसरा आपका बेटा RUBP. ये तीन चीजों की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है. And here we have represented how the light reaction and dark reactions are interconnected. They may ask on this question, on this diagram. तो ऐसा क्या हो रहा है यहाँ पे? ना वाटर जो है लाइट रिएक्शन में होके ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है. क्वेश्चन आएगा, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एंड दिस ऑक्सीजन इज कमिंग फ्रॉम which compound? Water. And sugar is being produced from carbon dioxide. And during this process, energy is required in very much quantity. And this energy is being supplied in which form? ATP and NADPH2. That's why ATP and NADPH2 are also called as what? Assimilatory powers. Assimilatory powers. Which one? ATP and NADPH2 are called as assimilatory powers because these are produced in light reaction and these are utilized in a Calvin cycle or dark reaction for the production of a sugar or glucose molecule. And ultimately, when many sugar molecules or glucose molecules are produced, they are stored in form of starch in the various part of the plant. Now moving to the experiments. There are 5 experiments are there on photosynthesis. The first one is starch test. For starch test, what we do? We use
iodine solution, because iodine will turn which color? Dark color, black or blue color if starch is present. ये पढ़ा हुआ है. Second thing, why the leaf is boiled in water? To stop the enzymatic process. Second question, why the leaf is boiled in alcohol? To remove the chlorophyll, right? Third thing आपका यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, what chlorophyll टेस्ट के लिए कौन सा, इनमें से क्लोरोफिल के लिए कौन सा टेस्ट की जा रही है? तो ये बेटा आपका क्या है ना, क्लोरोफिल है, दिस वन. ये जो आपका व्हाइट पोर्शन है और ग्रीन पोर्शन है, ग्रीन पोर्शन में फोटोसिंथेसिस होगा, व्हाइट पोर्शन में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा. जब इसको बेटा हम क्या करेंगे, स्टार्च टेस्ट करेंगे, जो ग्रीन वाला पार्ट है वो ब्लैक आएगा, ये याद रखना है. सेटअप सारे याद रखना. थर्ड जो है, सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस. ये ब्लैक कलर का पेपर स्ट्रिप यहाँ पे लगा देते हैं, तो वहां पे सनलाइट नहीं पहुंच पाएगी, उस पर्टिकुलर एरिया में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, बाकी जगह में फोटोसिंथेसिस होगा. तो जब स्टार्च टेस्ट करोगे, उस पर्टिकुलर जगह क्या होगा बेटा, आपका ब्राउनिश स्ट्रक्चर रहेगा, बाकी जो ये वाला ऊपर और नीचे वाला पार्ट है वो क्या हो जाएगा, ब्लूइश ब्लैक बन जाएगा. कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल, यहाँ पे ऐसे दे देगा ये सेटअप, और यहाँ पे एक्स लिख देगा. एक्स क्या होता है बेटा, KOH, दैट एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड. तो इस लीफ को जब आप स्टार्च टेस्ट करोगे, ये बाहर वाले एरिया में जो आपका बोतल के बाहर है, वो उसमें आपका स्टार्च बने होगा, अंदर नहीं बना होगा, जिसकी वजह से बाहर वाला स्टार्च टेस्ट में पॉजिटिव दिखाएगा, अंदर वाला नेगेटिव, नो चेंज इन कलर. एंड द लास्ट वन इज ऑक्सीजन इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. इसको हमने एक हाइड्रिला नाम का एक प्लांट है, या क्लोरेला, एक एक्वाटिक प्लांट को लेंगे और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फनल के अंदर रखेंगे और एक टेस्ट ट्यूब से उल्टा करके उसको इन्वर्ट करके रख देंगे, उसमें गैस बबल्स आपको देखने को मिलेगी, एंड दीज आर ऑक्सीजन गैस. एंड हाउ टू कंफर्म दिस ऑक्सीजन गैस, एक मतलब आपका क्या है, एक जो घुसता हुआ कोई मतलब मैचिस मैस्टिक है, उसको लेते जाओ तो वो क्या होगा, फिर से जल उठेगा, दैट कंफर्म्स व्हाट, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. Now, adaptation. What are the adaptation for photosynthesis? Large surface area should be there so that rate of photosynthesis will more. Leaf arrangement ऐसा नहीं होना चाहिए एक के ऊपर एक होगा तो फिर सनलाइट कम मिलेगा, तो लीफ का अरेंजमेंट होना चाहिए. थिकनेस ऑफ द क्यूटिकल जितना ज्यादा होगा लेस लाइट पेनिट्रेट होगी, तो इसलिए थिकनेस कम होगा तो अच्छा है. नेक्स्ट आपका क्या है, न्यूमेरस स्टोमाटा. स्टोमाटा जितना ज्यादा होगा, एक्सचेंज ऑफ मतलब कार्बन डाइऑक्साइड उतना ज्यादा आएगा, जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आएगा उसमें आपका क्या होगा बेटा, आपका यहाँ पे ना आपका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस उतना ज्यादा होने वाला है. ठीक है, नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे chlorophyll. More the number of chlorophyll will be there, then the rate of photosynthesis will be more. Veins are also required for the transport of water and minerals. Water and mineral both are required for the photosynthesis process. Next, the last chapter of our lecture, जिसमें हम लोग देख रहे हैं लास्ट चैप्टर 7 चैप्टर, जो कि आपका है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स. प्लांट में कोऑर्डिनेशन कैसे होती है, तो इसमें दो तीन चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है. स्टिमुलाई क्या होती है, ठीक है. सेकंड, फाइटो हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं. थर्ड, टाइप ऑफ मूवमेंट यहाँ पे क्या होते हैं, दो टाइप के, ट्रोपिक मूवमेंट होता है कि नास्टिक मूवमेंट होती है. ट्रोपिक मूवमेंट ग्रोथ डिपेंडेंट, एंड नास्टिक मूवमेंट दैट इज ग्रोथ इंडिपेंडेंट. एंड ट्रोपिक मूवमेंट में ये सब मूवमेंट्स आएंगे. फोटोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिक मूवमेंट यहाँ पे देख रहे हो बेटा, यहाँ पे जो शूट है दैट इज शोइंग पॉजिटिव फोटोट्रोपिक मूवमेंट. जियोट्रोपिक, टुवर्ड्स द ग्रेविटी, डेफिनेशन भी बेटा याद रखना, टुवर्ड्स ग्रेविटी, तो ये बेटा आपका क्या हो गया, जियोट्रोपिक मूवमेंट. थिग्मोट्रोपिक मूवमेंट यहाँ पे दिख रही है, ये थिग्मोट्रोपिक मूवमेंट है. थिग्मोनास्टिक अलग होता है. थिग्मोनास्टिक जो है आपका 10 मिनट प्लांट शो करता है, या विनस फ्लाइट्रॉप जो इंसेक्टिवरस प्लांट है वो शो करते हैं. दिस इज थिग्मोट्रोपिक, मींस दिस tendril, you see the tendril is being surrounded around a solid support. How that tendril come to know कि मेरे को इधर ही घूमना है, that's why it is called as thigmotropic. This is not as thigmonastic. Hydrotropism, the root moves in search of water, means root shows hydrotropic movement. Chemotropic movement that is shown by pollen tube. And helium हमेशा यही करता है, स्टोमेटा को क्लोज कर लेगा, तो जिसके वजह से आपका वाटर अंदर नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं आएगी, तो जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, तो इसकी वजह से ग्रोथ आपका इनहिबिट हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी. ठीक है, इसके अलावा और क्या काम करता है, प्रोमोट द डर्मांसी. सीड के डर्मांसी को प्रोमोट करेगा, मतलब ब्रेक होने नहीं देगा, सीड को जर्मिनेट होने नहीं देगा, तो प्रोमोट द डर्मांसी. और क्या करता है, विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीफ, स्ट्रेस हार्मोन है. जब ऐसे वाटर स्ट्रेस कंडीशन आएगा, मैंने बताया लेट विंटर की बात करें या आफ्टर विंटर, पोस्ट विंटर की बात करें, समर में बेसिकली क्या होता है, लीफ फॉल हो जाती है, जो डेसिडुअस प्लांट्स है लीफ फॉल हो जाती है. क्यों, ट्रांसपिरेशन से इतना वाटर लॉस नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं. ट्रांसपिरेशन को हम ये भी कहते हैं नेसेसरी इविल कहते हैं. नेसेसरी भी है, क्यों नेसेसरी है, बिकॉज कूलिंग डाउन कराता है, और इविल भी है
इविल क्यों है? वाटर लॉस हो जाती है, 99% वाटर लॉस हो जाती है ट्रांसपिरेशन में, जितना प्लांट ऑब्जर्व किया होता है। नेक्स्ट, डिटैचमेंट ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट, ये सारी चीजें कराता है। फिर आपका आता है लास्ट जो हार्मोन है, दैट इज इथाइलिन। दिस इज द ओनली गैसियस हार्मोन, कीप इन माइंड, इथाइलिन इज द ओनली गैसियस हार्मोन। सेकेंड थिंग, इट हेल्प इन राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फ्रूट राइपनिंग कराता है, ठीक है, फ्रूट को पकने में मदद करता है। क्वेश्चन आएगा, अगर हम कुछ कच्चे फ्रूट को पके हुए फ्रूट के साथ एक फ्रूट बास्केट में रखते हैं, तो फिर ये जो कच्चे हुए फ्रूट्स हैं, तो वो भी पकना शुरू कर जाते हैं। क्यों? जो राइपेंड फ्रूट है, दैट रिलीजेस इथाइलिन, एंड दैट इथाइलिन गैस promote the ripening process in the other unripened fruits, that is called as ethylene. Ethylene is the only gaseous hormone that help in ripening of fruit, ये चीज याद रखना है। and this is also a growth inhibitor, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पूरा जो है पहला पार्ट यहाँ पे आपका बेटा यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। तो आपकी जो भी डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर कुछ डाउट्स है आप पूछ सकते हो, अदरवाइज विल फिनिश द लेक्चर। ओके, थैंक यू एवरीवन, कल मिलेंगे। अगला लेक्चर आपका जो पार्ट 2 है, कल अपन कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। लास्ट 2 मिनट में लिखना हुआ है बस। क्या हुआ है?